Good evening, class. Today we have to focus the backbone chapter of that class, and that is the human health and disease. Okay, this is the most important topic for your board exam because sometimes these questions are asked for 5 marks to 4 marks. ठीक है, मलेरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 5 से 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं. Okay, now today we have to study the adjunct form of malaria. Okay, now we have studied that malaria are generally spread by the biting of female anopheles mosquito. मलेरिया जो है वो एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने के कारण फैलती है इन ह्यूमन बींग्स. ओके, एंड इट इज द मोस्ट डेंजरस बिकॉज इन प्रीवियस टाइम there is no any proper vaccines are prepared, so most of the human beings and most of the animals are generally die. बहुत सारे मर जाते थे, but today nowadays different types of medicine, different types of precautions has been introduced so that the most of the human beings take a proper precautions and try to adjust from that diseases. Okay, now we have to study that malaria is a very harmful disease which is created by different types of pathogens. ये generally pathogens से फैलते हैं, and pathogens meaning means several types of disease which carrier are called the pathogens. ऐसी बहुत सारी बीमारियों को जो लेकर आते हैं, कैरियर करते हैं, उसे हम pathogens कहते हैं. And pathogens may be bacteria, pathogens may be virus, pathogens may be protozoans and pathogens may be worms. या तो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या जितने भी प्रकार के होते हैं उसे हम पैथोजेंस कहते हैं. These are also called as parasites. Parasites पैथोजेंस कहलाते हैं, ठीक है, जो मलेरिया को कॉजेस करते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. ओके, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मलेरिया. मलेरिया को फैलाने में सबसे बड़ा रोल प्ले होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, बिकॉज इन आवर नेचर देयर इज सेवरल टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज आर देयर. एडिस मॉस्किटो, कुलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, और भी एजेक्टीज एंड टाइगर एंड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस दैट मलेरिया इज जनरली कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. अदर रेस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिजीज. ओके, सो coming to the next point of plasmodium. Plasmodium is digenetic characters. ठीक है, डाइजेनेटिक कैरेक्टर्स मींस मोनोजेनेटिक मींस सिंगल, एक कैरेक्टर्स होंगे. डाइजेनेटिक, डाई मतलब यहाँ पे दो से रिलेटेड है, यहाँ पे दो, यानी डाइजेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं. दैट्स व्हाई दो होस्ट होते हैं इनमें. दो होस्ट मींस फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी. ठीक है, एक इनमें प्राइमरी होस्ट होता है, दूसरा इनमें सेकेंडरी होस्ट होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डाइजेनेटिक. इनमें डाइजेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, मे बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी. मोस्ट 100% आपको ये मिलेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ डाइजेनेटिक, इनके फैक्टर्स डाइजेनेटिक होते हैं, दो फॉर्म्स में डिवाइडेड होते हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू टू होस्ट. दो होस्ट होती है जहां पे ये जनरली अटैक करते हैं. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी होस्ट एंड सेकंड इज सेकेंडरी होस्ट. पहला जो होता है हम इसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं, और जो सेकंड प्रोसेस होता है उसे हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं. ओके, नाउ प्राइमरी होस्ट आर जनरली टेक्स प्लेस इन मैन, यानी ह्यूमन बींग्स में होता है ये प्राइमरी स्टेप, एंड विच आर जनरली टेक्स एन मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बाय द एक्शंस ऑफ फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस के कारण. ओके, नाउ the secondary hosts generally concluded that the mosquito, जो secondary step होते हैं, host होते हैं, वो mosquito में होते हैं, and they generally do sexual reproduction in their own body after sucking the blood from the infected person. जब भी ये किसी infected persons को काटते हैं तो उस टाइम पे ये blood इनके body के saliva के थ्रू इनके body के stomach में जाता है, वहां से इनके divisions चालू होते हैं. But further we have to study the primary host. Primary host मतलब how the saliva of mosquito generally enter into the human body. आखिर saliva जो है human body में enter होता कैसे? First, when the mosquito bite during the day, कभी दिन में या कभी night में काटते हैं, they secrete special type of enzymatic saliva into the human's body, and that saliva mix with the blood and leaches to the several types of body parts. It may be livers, heart, and many more. And when it enters the body,
डेफिनेटली इट क्रिएट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स दैट इज कॉल्ड स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है, ब्लड सेल्स में मिल जाते हैं, इट आल्सो क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय ऑफ हीमोसेल्स। हीमोसेल्स मींस ब्लड के सेल्स को ये डिस्ट्रॉय या रप्चर्स करने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट मतलब फॉर्मेशंस ऑफ स्पोर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट the eosinophilic granules appears that is called the Schuppner's dot stage। एक जब ये सेल्स के साथ रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पे एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं जो कि ग्रेन्युल्स होता है, दैट इज कॉल्ड द Schuppner's dot stage in or maybe state also we can say that Schuppner's dot stage is called when the hemojoints is totally ruptured by the actions of sporozoite। sporozoite के actions से ये ruptures होते हैं and it appears as a granule like substance that is called the Schuppner's dot stage। okay, most harmful diseases is created in human beings। so I told you that how the mosquito enter into the human body after bitten। जब ये काटते हैं they secrete saliva into the human's body and after the secretion of human body they reaches in every parts of the body by blood, mostly in livers, and they break the hemojoint and hemoglobin and ruptures it and formation of sporozoites takes place inside the human blood cells। okay, that's why several types of symptoms will be occurred। now next coming to the next point, after the human beings are get affected by the plasmodium, ठीक है, ये अफेक्ट हो चुके हैं, but when the several types of mosquito bite the any other infected person, they take saliva by blood in their own body and they do sexual reproduction in the way of sporogony। ठीक है, जब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटते हैं तो उनके ब्लड को सक करके ये अपने बॉडी के अंदर लेते हैं एंड देन ब्लड रीच इनटू द स्टमक ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के स्टमक तक पहुंचता है। आफ्टर द रीचिंग ऑफ स्टमक ऑफ मॉस्किटो दे फॉर्म स्पोरोगोनी, स्पोरो बन जाते हैं स्पोरो। ठीक है, नेक्स्ट when the sporogony are totally formed, they show the incubation period that reaches up to the 14 days। और इनके बीच में उनका incubation period देखने को मिलता है which may be last from 14 days। 14 दिन के बाद से जो incubation period होता है वो दिखता है कब? when the mosquito does completely sexual reproduction in their body and when they bite some other human beings or healthy human beings, that time they also secrete dangerous type of enzymatic saliva into their body and that time mosquito do sexual reproductions by taking the blood of human beings and create several types of diseases in humans। ठीक है, उस टाइम पे ये फिर किसी हेल्दी पर्सन को काटते हैं और उसमें जो सलाइवा होती है वो उसको इंसर्ट करते हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ all the cycles are completely I have cleared it, but there is a several types of more important topic, but generally in exams only that points are generally asked। okay, what is malaria, their positive evidence, their symptoms and their prevention also। okay, and how many types of malaria can be determined। so these types of topics may be asked in your board exam। so now next coming to the next point, the incubation period, you have to write down the 14 days the symptoms will be occurred, symptoms आने लगते हैं and probably most important symptoms में भी हेडेक, सर में दर्द, मस्कुलर जॉइंट्स, हमारे जहाँ पे भी जॉइंट्स वगैरह होंगे वहाँ पेन होने लगेगा, माउथ बिकम्स ड्राई, माउथ एंड थ्रोट बिकम्स ड्राई, जो माउथ है और जो गला है वो ड्राई यानी सूखने लगेगा। ठीक है, बट टुडे वी हैव टू डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइक फीलिंग्स ऑफ चिलिंगनेस। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडी लगती है एंड सिवरिंग एंड हेडेक, सर में सबसे ज्यादा दर्द होता है और सिवरिंग, सिवरिंग मतलब इफ यू प्रोवाइड अ वेरी कोल्ड टू एनी ह्यूमन बॉडी देयर बॉडी विल बी श्रिंक, उनकी जो बॉडी है सिकुड़ने लगती है ठंडी के कारण, दैट इज कॉल्ड सिवरिंग। सिवरिंग मतलब बहुत ज्यादा ठंड लगना इन द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड द रिगर स्टेज। इस स्टेज को हम रिगर स्टेज के नाम से जानते हैं व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स गेट severed from the coldness of plasmodium, that is called the rigor stage। rigor stage उसको कहते हैं जब human beings को बहुत ज्यादा ठंड लग के बुखार आती है, that is called the rigor stage। okay, now coming to the next point, the different types of malarias are there। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मलेरिया हैं। okay, now coming to the nature of malaria, we have to discuss the first bagging tertian malaria। जो bagging tertian malaria है, it is caused by plasmodium vivax। ये plasmodium vivax के कारण फैलता है, but the fever are recurrence about 48 hours।
48 घंटे के बाद यानी 48 आवर्स के बाद वापस रिकरेंस होते हैं, यानी फीवर जाता है और फिर 48 घंटे बाद वापस उस इन्फेक्टेड के कारण वो वापस आ जाता है। ओके, नाउ सेकंड इज malignant tertian bacteria. Malignant tertian bacteria is also important factor which is created and caused by Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum के कारण ये होते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इनका जो रिकरेंट होता है वो 36 to 48 आवर्स में फीवर जो है वापस रिपीट करते हैं। ओके, नाउ क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया इज जनरली caused by Plasmodium malaria and the fever may be repeated approx 72 आवर्स, यानी 3 दिन के बाद फीवर्स जो है ऑटोमेटिक रिपीट होते हैं, 3 दिन फिर 3 दिन। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट ओवल मलेरिया। ओवल मलेरिया जब फीवर्स में भी रिपीटेड फ्रॉम 48 आवर्स, इनमें जो बुखार है वो 48 आवर्स में रिपीट होते हैं एंड इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम ओवल। किससे फैलता है ये? Plasmodium ovale से। Okay, so these are the most important factors. Now we have to discuss the most important features, that how to control. We have discussed symptoms, we have discussed how the agents created malaria in human beings, how Plasmodium go inside the cells, how Plasmodium affect the different types of hemojoins, and now next which type of symptoms and how many types of malaria we have discussed. But today the current scenario is that all the publics and all the things will need to how we have to prevent from malaria. So I am going to tell you several types of preventions are there and you all have to mention very strictly. Now coming to the next point, there is a several types of preventions. अगर preventions की बात करते हैं तो इनके preventions बहुत सारे हैं, ठीक है। First, stop या avoiding water. वाटर में भी डर्ट वाटर। ओके, स्टॉप अवॉइडिंग वाटर या फिर डर्ट। डर्ट मतलब जो गंदे पानी है उनको एक जगह पे ज्यादा समय के लिए रोकना नहीं चाहिए। सेकंड, अगर इनको रोकेंगे दैट टाइम द मॉस्किटो विल बी रीजनरेट, बार बार वो पैदा होंगे। सेकंड, यूज मॉस्किटो नेट। if you will using mosquito net, definitely mosquito will not enter your net and definitely it will not able to cut, ठीक है, वो आपको कट नहीं पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस दैट गम्बूसिया। गम्बूसिया इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लार्वा फिश। लार्वा फिश होते हैं। Gambusia is a special type of larva fish which are helped to eat different types of larva of mosquito. Gambusia जो है एक प्रकार के लार्वा फिश होते हैं और ये क्या करते हैं, किसी भी मच्छर के जो लार्वा होते हैं उनको पानी में ही ये खा जाते हैं, जिस कारण से मच्छरों की जो वैरायटी है, जो मच्छरों की तादाद है वो बढ़ नहीं पाती है। दैट इज ऑल्सो अ गम्बोसिया। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लार्वा फिश विच ईट्स ओनली लार्वा। ओके, नाउ इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन्स आर देयर, बहुत सारी दवाइयाँ आजकल मेडिसिन्स बनी हुई है। दवाइयों में अगर हम बात करते हैं द मोस्ट स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन में अगर हम बात करते हैं क्वाइनिन। क्वाइनिन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन विच आर जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चिकोना प्लांट, ठीक है। चिकोना प्लांट से हम उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं। उसके बावजूद भी और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं क्वाइनिन के, ठीक है, जिससे हम इनका इलाज करते हैं। Okay, so there is a several types of vaccines has been discovered by the several types of scientists and now the malaria is totally cured very successfully. आज के डेट में मलेरिया का बहुत ही सक्सेसफुली इलाज हमारे वर्ल्ड में है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू ऑल हैव टू फोकस दैट स्टॉप अवॉइडिंग वाटर, ठीक है। मॉस्किटो नेट यू हैव टू बी प्रिपेयर। गम्बूसिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी स्ट्रेंथ वाटर का यूज नहीं करना है, ना ही उसे काफी देर तक एक जगह पे स्टोर होने देना है, ठीक है। इन सारी चीजों को देखते हुए मेडिसिन में क्वानिन है, ठीक है, क्वारानोन है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो इस बीमारी से इलाज करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज enough for today class. If you get any problem regarding the malaria, you can ask me. Okay, thank you students.